Yeah, hi everyone. My name is Sagarprajapati, and today we have Akshat here, who is Azure Data Engineer, his current company. And today we will talk with him about his journey, how he has become a Azure Data Engineer in this short period of time, and what was his preparation plan, and how he's doing in this company, and what work he is doing on a daily basis. And if someone is fresher, then a fresher or someone who is wanna prepare for this Azure Data Engineering, then what should be the roadmap and what should be the strategies and what are the resources he was following during his interview preparation. So hey, I Akshat, we can start over here, and first we will continue with the introduction part, and then we will move to the what's your preparation and what was your journey towards Azure Data Engineering. Okay. So first of all, thanks a lot, Sagar Prajapati, for inviting me to your channel as a guest. I'm happy to be here. And so let me introduce myself. My name is Akshat Dashore, and I have the experience of approx 5 years. So in my past, I worked on the different digital technologies that include the blockchain, machine learning, and from last couple of years, I am working with the Microsoft Azure, and as a ETL engineer, I'm working. So big data and Azure was my tech stack from last approx 3 to 4 years. And other than that, I also cracked multiple Microsoft related certifications, exams from Microsoft. Those are related to Azure expertise and Python also. So that's a brief about my career. And I would like to say thanks to Geekcoders and a couple of other platforms like my Geekcoders as well. They are providing the free of cost resources to the non-technical people, technical people, freshers, and the experienced people as well. So those are actually very helpful. And with the help of those resources, I'm happy to share that within the last 5 years, I got the high, like my salary is increased 25 times. So thanks a lot to all the platforms like my Geekcoder for the same. Thank you, Akshat, for the wonderful feedback, and I hope you're doing very well in your current organization. And yeah, so we can move to the next question. If someone is fresher, then what should be the roadmap for him? And if someone having, let's say 5 to 6 years of experience, or maybe I can consider 3 to 4 years of experience, then what should be the plan? Like, what's the courses? Not courses, I can say. What are the skill set he should have, since you are having 5 years of experience as of today, right? So if you can, focus on these part, then would be great for my users. Okay, so before answering your question, I would like to highlight one more thing. Like, let me give you the real world example for the same. Before moving towards the Git coder, someone should know why they should move towards the cloud platform, Azure platform, or big data tech stack as well. So as this video is also will also be watched by the freshers, and you said for the non-technical people also, this video will go ahead. So let me explain same with the Hindi. सो जैसे कि सपोज करो कि मुझे इडली सांभर बहुत अच्छा बनाते आता है. दिस इज वन ऑफ द रियल वर्ल्ड एग्जांपल आई एम गिविंग सो दैट पीपल फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड और द freshers कैन आल्सो अंडरस्टैंड एंड इट वुड बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड. ओके, तो सपोज मुझे इडली सांभर बहुत अच्छे से बनाते आता है. हाउएवर कंपनी वांट्स दैट दे वांट समवन हु इज एक्सपर्टीज इन मेकिंग द पिज्जा. सो इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस फॉर देम. अगर Right. मुझको इडली बनाते आती है, उनको पिज्जा चाहिए, तो मेरी इडली से उसे कोई मतलब नहीं. Now let me explain you the same thing with the technical related things. So when I am saying the Italy Sambar, then this is something nowadays non-tech related profile. We can include the digital marketing in it. We can include the UI developer in it. We can include the testers in it. They are putting a lot of efforts. However, they are not actually getting the salary which they deserve. And when I am saying the pizza, then this is something I am specifically talking about the Microsoft Azure platform, ETL engineers, and big data platform as well. Likewise, Hive, Hadoop, on-premises as well. So this is something one should understand, like before changing the tech stack, that what is the current tech stack that is having the less supply of engineers and which is high in demand. So that's why one should switch to the big data and cloud platform right now as per the current situation of the market. So this is one of the thing why one should switch to the Azure and cloud platform and plus big data as well. Now to answer of your question, that what would be the roadmap for a fresher? So I don't think that Python or SQL expertise in either of these things will help a fresher or a non-tech person to get into the big data or the Azure data engineer platform.
तो ऐसा है ना कि सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा आना इज मस्ट. Yes. So the first thing one should go is the Python basics, then SQL basics. We are having the multiple free of cost resources for the same, like SoloLearn, like W3 resource. These Correct. are a couple of the things where we can do the debugging for SQL. And for Python also we have like W3 School, W3 resources, SoloLearn again for the same. After that, one should switch towards the videos like IntelliPart. They are giving the free of cost interview questions approx 30 to 50. That would be helpful. Plus, Geekcoders is also providing a lot of videos related to interview questions, plus the real world examples, debugging, and all that. So, from my point of view, as a fresher, one should start with the solo learn for learning the basics of Python and SQL. Later, he should move for solving couple of questions, real world questions from the W3 resource. And later on, then they should move towards the Azure platform for big data. And for So Azure and big data, we are yeah, so Akshay, so yeah. someone is learning for the Python, right? Learning Python, then he should also focus on the problem solving skills as well as data structure skills, or it should not be, that much. I mean, someone should not focus too much Okay. in the data structure part, Okay. So let me answer your question. So basically, problem solving skills and data structure. Those are the two different things. right? Data structure is a specific technical component. However, problem solving is something related to analytical skills, you can say. So data structure, I don't think so. Like I have covered multiple projects in my past related to big data and Microsoft Azure. So I didn't saw that there is a lot of data structure related work. It matters, but not that much. But Now I, coming to the second part, yes, yeah, yeah. No. So that data solving related stuff that actually matters a lot. Like recently, I wrote the code of 3,000 lines. That was going for the 30,000 line of code. But I because of couple of user defined functions, yes, it was now 3,000. So this is the kind of problem solving skills that will actually help us out in the real world projects. So this is one thing which actually matters when you have to work in the real world projects. right, right. However, Mm, from the perspective of clearing the interview, what matters is just go through the limited number of interview questions. If you will go through the 200 or 3,000, sorry, 200 and 300 interview questions, then it's not actually possible to recall the answer of the question when interviewer is asking you the same. So those free of cost resources you can find out in the IntelliPart. In Geekcoders also there is multiple series of videos. Plus the best part is I have created the 100 questions list. Those questions I have created after giving the 104 interviews last year. So when you keep on giving the interview, then you should collect those questions, come to home and then go through these questions. That will help you out later. right, right, right. Actually, that is absolutely correct. So, whether we are failing or passing the interview, we should collect those interview questions. And I believe that no, you must have also found out the same question in the next interview also, right? Somewhat same questions. Exactly. Yes. Yeah, Exactly. that's good. That's good. And Akshat, thank you for answering this question. And the next question would be like, as I can see, there are a lot is going on over the LinkedIn, over the internet, or other social media that people are talking about 1 TB data, how to process 1 TB data. 100 TB data also I have seen, some of the institute are teaching this much. So as a fresher, because like many people are asking the same question, hey Sagar, do I really need to learn this much depth knowledge? I mean, I whether someone should have this much depth knowledge in terms of Spark or yeah, Spark or Hadoop. So if you can brief me on that. If since you have good experience, you have created multiple projects in your company. So how much data you are dealing currently, or maybe in the past company, how much data you deal on a daily basis? So I want to be able to disclose the exact data right now I am dealing with because it Yeah, may be yeah. compliance issue. Yes, yes. However, I can share my past experience with you. So basically, the answer of your question is it depends on project to project. Past couple of years when I was working on my first project, then it was approx 200 GB of data coming on the daily basis. That was the streaming data. So at that point of time when we have a lot of data to deal with, then Spark optimization techniques actually matters a lot. It doesn't matter you are fresher or experienced, what experience you have. You have to write the optimize the code
But as a fresher, you have that bandwidth, or what we can say, that luxury that you can go to the senior and you can ask for the same and how it can be optimized. However, in my second project, the data was 10 MB every day I'm receiving, Mm. and that data is also not the streaming data. That was the on the Batch. in batch that Mm. data is coming. Correct. So that is something coming in the batch. However, in our first project, it was the streaming data of 200 GB per day. So it is something depends on project to project. It has nothing to do with the company. As a fresher level, you should go for optimization as well, because at the time of interview, these questions are mostly asked that how can you fix the skewness issue, Correct. Right. and what are the staff optimization techniques. How will you handle the real world scenario? Like, let's say if we are getting the data uh, on the sometimes on weekly basis, sometimes on the daily basis, sometimes on the monthly basis. So what kind of trigger will you use in that kind of scenario? So we had to give the answer that event or trigger would be the answer in that scenario. So this is for this kind of for cracking the interview, we should learn the optimization techniques. However, in real world projects, it depends on project to project that what data we are receiving. And if this is a small data, then it that doesn't make any sense that we partition college, because we Right. don't have we need not any kind of optimization techniques. Right. If there Right. is Right. huge data, then only we have to deal with Yeah, that. so I, Yeah, I, I also believe, when we are receiving at least 20, 30, 40 GBs data, then we should focus on these, optimization method. Otherwise, we can live with this, correct. Spark also. It won't break our pipelines. Yeah, that's true. But if we are working on technology, we should at least know the process. If we face this kind of issues, so we should know how we should fix it. What is the step we should take it next, Correct. right? That's true. Okay, Akshat, thank you for it. And next question I would ask you that, since you are working on Azure Data Factory and many people are asking me how much I should prepare for Azure Data Factory. So if you can, brief me there, if someone having 2, 3 years of experience, whether he should learn whether he should learn the data flow part, as well as if someone is preparing for the Databricks, or what it should be, you know. Okay, so if your purpose is to crack the interview, then you should take any kind of a specific thing. You can say that I worked on the Azure Databricks and PySpark. You will get you can be like you should learn those parts only, and you can crack the interview. Interviewer will never ask that we want everything, because Azure may provide more than 200 services. So Correct. it's not actually possible for everyone to learn each and every service. However, in real world projects, definitely either we have to use the combination of Azure Data Factory, Azure Databricks, ADLS Gen 2. Along with Snaps. that, we also have to work with Logic apps. Yeah. And if we are not using all of these things, then we have to go with the Synapse specific, or the combination of Databricks, Data Factory, all those tech stack. So the answer of your question is Data Factory is something in real world projects. Definitely, it is very useful, and most of the companies are using that everywhere. Pipeline creation is the must thing. So this is something fresher should learn. If he is facing a lot of issues in it, then he can switch to another thing, that is Databricks, that's PySpark. But he should be expertise in either of them, either Data Factory or the combination of Databricks and PySpark, for the purpose of cracking the interview. However, in real world projects, he or she definitely have to deal with all these three things. Right, right, Akshat. Okay, so yeah, this is also my expectation. What you answered. As someone who's preparing for interview, he should be able to answer at least thoda thoda in each of the resources, because Correct. every company uses these 4 to 5 things in a company. And what about since people are also asked, like, since I have created a project, right, on my website, and people are asking me why you are teaching me CI/CD pipelines, whether it is useful or not. Since I am a Azure data engineer, I am a data engineer, why should I release my code to next environment, or next environment? So I mean, what you can think of it here, someone should learn this CI/CD pipelines, making up DevOps model or CI/CD things, or not? What do So you it is suggest? must for Hmm. everyone to know at least the basics of CI/CD pipeline. Basics आपको definitely पता होनी चाहिए. Like in my first company, I was supposed to work on the CI/CD pipeline for sure. However, in the another organization, I want to be able to disclose the name of the organization. However, in that organization,
For CI/CD pipeline, they are having the different team. So I need Hmm. not to touch either the CI/CD pipeline, or I also can't create the logic app or some other services also, because there is a specific infra team for the same. So CI/CD pipeline basics everyone should know, but expertise I don't think it is required Correct. until and unless you are saying in the interview that I am expertise of CI/CD pipeline. एटलीस्ट Yeah, अगर else हम the, एडीएफ पे काम कर रहे yeah, हैं, लॉजिक ऐप पे काम कर रहे हैं, जो भी correct. टूल्स पे काम कर रहे हैं, वी शुड बी एबल टू डिप्लॉय दोस रिसोर्सेज, दोस प्रोडक्ट टू द नेक्स्ट एनवायरनमेंट, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि वी आर एजो डेटा इंजीनियर, फुल स्टैक एजो डेटा इंजीनियर. आई नो एवरीथिंग फ्रॉम द एनालिसिस Correct. पार्ट till the deployment part, or we can say if we include Power BI also or Tableau, so I can say कि हाँ मुझे पूरा आता है. So we can expect much money, I guess, from the companies also, if we show these 4 5 things, because I can see all are writing same thing, all are writing to Databricks, ADF, and I'm not able to find out any a post or blog related to PowerShell automation runbook, what we call, right, CI/CD pipelines, and we can say logic app. तो इसको तो कोई बोलता ही नहीं है, सब लोग बस ADF एंड स्पार्क डेटाबेस द को ही. रीजन बिहाइंड इट मैं आपको रीजन बताता हूँ उसके पीछे. अगर मैं गूगल पर सर्च करूंगा जो डेटा इंजीनियर ट्यूटोरियल और समथिंग लाइक इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो उसमें आपको लॉजिक ऐप या फिर ये सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी. उसमें आपको वही क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो रिपीटेडली इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. दैट इज द Correct. रीजन कोई नहीं, इंटरव्यू that में is true. That एज अ is true. फ्रेशर But नहीं what, डालता. what, what I would suggest, since we are discussing this part, what I would suggest ना कि लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने रेज्यूमे में सिर्फ डेटाबेस आप लिखो, अच्छे से लिखो, है ना, एडीएफ अच्छे से लिखो, एक्सप्लेन करो वॉट एवर प्रोजेक्ट यू हैव मेड इट, एंड लॉजिक ऐप की मदद से, ऑटोमेशन अकाउंट, एंड वी कैन से पावर शेल की मदद से, व्हाट यू, if you have done any automation or कुछ POC किया, so we can include also in our resume, so that उसमें थोड़ा सा एक हाईलाइट होएगा आपके रेज्यूमे में कि आपने या कुछ डेफिनेटली इट POC. मेक यू डिफरेंट देन अदर कैंडिडेट्स. यस, सो व्हाट आई एग्रीड. मैं भी ये बोलना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि आप लोग, सब लोग करो, लिखो. सिर्फ एडीएफ सीखने से और डेटाबेस पे ही प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं. बहुत से रिसोर्सेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं. अभी SQL डेटाबेस भी होता है ना, सिनैप्स भी होता है, DW भी होता है. सो दोज थिंग्स ऑल्सो वी शुड इंक्लूड इन आवर प्रोजेक्ट. मैंने इतने पैसे सेव किए कंपनी के बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक ऐप, कुछ ऑटोमेट कर दिया, ईमेल्स को मैंने ऑटोमेट किया. सो वो वी शुड ऑल्सो इंक्लूड दोज पार्ट इन आवर रेज्यूमे, एंड वी शुड एटलीस्ट नो कि ये होता क्या लॉजिक है. ऐसा नहीं कि बस लिख दिया. एटलीस्ट यू शुड नो कि मैं अगर पूछूं कि प्रोसेस क्या होता था, फ्लो क्या बनाया था आपने, सो यू शुड बी एबल टू, बिकॉज आई कैन सी ना, सब सब जगह जितने प्रोजेक्ट हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग बस लॉजिक ऐप का एक ही यूज़ केस बताते हैं, ईमेल्स ट्रिगर, ईमेल्स आ जाएगा नोटिफिकेशन. इसके अलावा भी बहुत यूज़ केस हैं, अच्छे अच्छे यूज़ केस हैं, एग्रीड. है ना. तो जो भी ये वीडियो देख रहा, तो आई आई शुड से कि एक बार लॉजिक ऐप पे भी जाओ, बहुत से यूज़ केस हैं, अपने रियल टाइम को सोचो क्या क्या हो सकता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करो उस पे, है ना, लॉजिक ऐप की मदद से. जस्ट इट्स जस्ट अ टूल, यू हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट एंड फिल द इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स. तो एंड बहुत बहुत ही सस्ता टूल है वो, है ना, उसमें पैसे भी नहीं पड़ते हैं ज़्यादा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एक्चुअली. एंड yes, Akshat, so thank you for answering all the questions. So I just, ask two more questions related to, या प्लीज गो अहेड. related to the interview perspective, कि अगर आपका इंटरव्यू है 5 years के एक्सपीरियंस पे, या 4 years एक्सपीरियंस पे, लास्ट ईयर आपने क्रैक किए हैं, 114 इंटरव्यू आपने दिए हैं, तो उसमें अगर मैं पूछूं कि आपने किस टाइप के क्वेश्चन फेस किए, एक एक दो एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, या जो लेवल क्या था, क्या सभी कंपनीज में एक ही जैसा लेवल था, कि किसी कंपनी में थोड़ा सा हाई लेवल होगा, आई बिलीव, राइट, तो जो दूसरी कंपनीज होंगी उसमें थोड़ा सा इजी लेवल होगा. तो अगर आप वो बता सकते हो, एंड आपकी जर्नी जैसे आपने बोला ना, यू हैव गॉट 300% हाइक, और आपकी सैलरी अच्छी बहुत बढ़ गई है, तो आपने क्या क्या, मतलब कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, मतलब आपने फेलियर भी देखा होगा. ऐसा नहीं है कि आपके 114 इंटरव्यूज क्लियर हो गए होंगे एक बार में, फेलियर भी देखा होगा, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया, है ना, उससे आपने क्या पॉइंट्स कवर किए. तो अगर आप ये बताओगे तो आई गेस सबको बहुत अच्छा यूजफुल होगी ये टॉक. Yeah, definitely. So basically, there are three resources from where I learned a lot. As I mentioned earlier, also.
From IntelliPart, I learned the 30 to 50 interview questions. So it is must to understand the concepts for the same. Window questions is the one of the most asked questions in the interview. Correct. Window question. Right. Other than yeah, window, yeah, exactly. So now moving forward, जो मैं अभी recall कर पा रहा हूँ questions, they are asking about the triggers. आपको एक सिनेरियो दे देंगे कि Azure Data Factory की पाइपलाइन है, आपको SFTP सर्वर से डेटा लेकर आना है एंड देन उसको ADLS Gen 2 में रखना है. Now we have to extract the data from the ADLS Gen 2. Now within Databricks, or we can say within the Synapse notebooks, we have to perform multiple transformations and then save it back again to the ADLS Gen 2. So what would be the approach will you use? Keyword related questions होते हैं real world scenario लेकर. तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि देर दो तरीके की कंपनियां होती है, एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. तो जो सर्विस बेस्ड क्वेश्चंस होती है वो उनके क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है. अगर आप इस पर्पज से पूछ रहे हो कि हाउ समवन कैन क्रैक द इंटरव्यू ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी, then definitely I can say that theoretical questions given on the IntelliPart, or we can say for the coders also. So those are sufficient. Theoretical is sufficient. Machine testers ज्यादा होते नहीं है in service based companies. और दो राउंड होते हैं, एक टेक्निकल होता है मोस्टली एंड वन इज समथिंग वी कैन से काइंड ऑफ मैनेजरियल राउंड. तो उसमें बहुत कम टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं. However, in product based companies like Globant and like Tiger Analytics, so these are the companies, they are taking 3 to 4 technical rounds. Machine test, those are actually very difficult, 30 minutes to 1 hour each and every interview, and they are also taken by the 3 to 4 experts each round of interview. So for that purpose, you have to be prepared for the scenario based questions. They also want you to debug the codes or questions whatever they will give you on the basis of real world scenario. They will take questions from the HackerRank as well. Recently I saw for Qualcomm, there were 4 questions from the HackerRank. So if you are talking about the product based company, then real world questions are there, and for service based company, theoretical questions would be sufficient. And for Python and SQL, there are multiple repeated questions which can be asked. ओके, श्योर श्योर. एंड अगर हम लोग Yeah. ये डेटाब्रिक्स की बात करें तो डेटाब्रिक्स में जैसे कि वी जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आई बिलीव कि मेरी पाइपलाइन है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, मेरा कोड है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है. सो हाउ विल यू ऑप्टिमाइज इट? आपकी ज्वाइनिंग जो आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें से आप क्या पहले चेक करोगे? पार्टीशन चेक करोगे, सॉल्टिंग देखोगे, स्क्यूनेस देखोगे? आई बिलीव उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, राइट, आपसे भी? एग्जैक्ट. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलेज और रिपार्टीशन में क्या डिफरेंस होता है, राइट. मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन. अगर आप ये पूछना चाह रहे हो एग्जैक्ट, तो वो लोग बताएंगे नहीं ब्रॉडकास्ट टू जॉइन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बट दे हम्म. विल आस्क इफ यू आर हैविंग वन स्मॉल डेटा फ्रेम, वन लार्ज डेटा फ्रेम, then what will you do in this kind of scenario? Then your करेक्ट. answer should come up like broadcast to join is the answer of your question. I will use broadcast join so that we can save the processing यस. time and memory also. करेक्ट. Moving forward, they will ask that how will you handle the bad records that can be सीएसवी handled वाला, by राइट. using couple of mode. हाँ, हम्म. correct. Permissive, fail fast. और अगर आपने बता दिए तीनों मोड तो आपको एक्सप्लेन भी करते आना चाहिए. This राइट is again राइट one of the राइट. facts. यार, दिस इज टू लाइक व्हाट आई सी कि लोग सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, ब्लॉग पढ़ रहे हैं, वो कोड नहीं लिखते हैं. है ना? कि अगर मेरे से कुछ पूछ लिया जाए कि आप कोड करके दिखाओ, तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा कि मुझे आता ही नहीं है कोड. मैं सोचूंगा मुझे गूगल से तो है, गूगल से मैं कोड देख लूंगा जब मैं अपने कंपनी में काम कर रहा हूँ. बट एटलीस्ट ये जो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं, आप अगर 10 को कंपनीज में दोगे तो इसमें से आपको 8 या 7 क्वेश्चन मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे. हो सकता है थोड़ा सा टिप ट्विस्ट करके Definitely. दे दे, ट्विक विक करके दे दे क्वेश्चन, बट एटलीस्ट आपको इतना तो ये परफेक्ट. मैंने बहुत जगह क्वेश्चन सुना है, एसएफटीपी वाला भी मैंने एक अपने यूजर से Hmm. सुना हुआ है कि उन्होंने ये सिनेरियो दिया था. तो या आई मीन आई थिंक वी आर गुड हेयर, एंड पीपल जो भी यूजर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिल गई होगी कि हाइप में मत जाओ, है ना, धीरे धीरे चलो. एंड फेल भी होगे, पास भी होगे, फेलियर दिखेगा तभी सक्सेस दिखेगी, है ना, एकदम से. Yeah, definitely, यस. definitely, definitely. When I started giving the interviews, तो window functions के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था. Then I started debugging, learning for the same. And when I gave 104 interviews, and I had offers, more than 10 offers, more than 15 offers. So including all the rounds, those are the 104 interviews. I have created one list of 100 questions,
and now those 100 questions are something which is the mostly repeated questions. तो उसके बाद में मैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बताई है मैंने, जो 3 या 4 Yes. टेक्निकल राउंड्स लिए थे, दोज कंपनीज आई ऑल्सो आई एबल टू क्रैक बिकॉज ऑफ दैट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. तो आप विंडो फंक्शंस अच्छे से पढ़ सकते हो, स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अच्छे से पढ़ सकते हो, Right. हाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एडीएफ, वन ऑफ द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन. Yes. अगर Right. आपका Right. क्वेश्चन ये कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, सो दिस इज दोज आर कपल ऑफ देम. एंड फर्स्ट जो भी फ्रेशर है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसको ग्राउंड्स क्लियर अच्छे से होने चाहिए. देन ही कैन एबल टू क्रैक एनीथिंग और सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और एनीथिंग. करेक्ट. अगर हमें ग्राउंड से क्लियर नहीं है डेफिनेटली, हमारे, तो फिर हम वी कैन नॉट एबल टू क्रैक इट और सॉल्व एनी प्रॉब्लम. डेफिनेटली. ओके. आप पाइस्पार्क एपीआई यूज कर रहे हो, आपको पाइथन में फंक्शन कॉल करते नहीं आता है, आपको यस. सीक्वल के अगर सिंटैक्स नहीं आता है, डायरेक्टली विंडो फंक्शंस पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम है. तो दिस इज समथिंग बेसिक्स बिफोर यस. मूविंग टुवर्ड्स द विंडो फंक्शंस, और वी कैन से बिफोर मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द like Azure or big data, you राइट. should know at least the basics of Python. Yes, yes, actually. And one last question. Yeah, If sure. someone is, I mean, having 2-3 years of experience, वो कितना expectation कर सकते हैं अभी, ऐसा salary hike, I mean, if you can, Okay. brief, मतलब एक अगर आपका आइडिया Okay. हो, है ना, since आपने इतने इंटरव्यूज दिए हैं अभी, तो करंटली अगर आप बोलो कि अगर मेरी सैलरी लेट्स से 5 to 6 लाख हैं, तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अभी करंट मार्केट के हिसाब से, जो आपको आइडिया है, अगर रफ आइडिया. ओके, सो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज द रियल वर्ल्ड थिंग. सबसे पहली चीज इस पे ये डिपेंड करती है कि आपकी करंट सैलरी क्या है. गोइंग फॉरवर्ड आपके पास कितने काउंटर ऑफर्स हैं. एक जो प्रॉब्लम क्या होती है कैंडिडेट के साथ, अगर मेरे पास सपोज करो मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा 10 लाख का पैकेज है, अब मेरे पास अगला ऑफर आया 12 लाख का, अब मैं काउंटर ऑफर लेकर जाऊंगा उसके पास, बोलूंगा मेरा 12 का ऑफर है, मुझे 13 लाख दे दो, हम्म. देन आपको वो 13 लाख का दे देगा. बट दिस शुड नॉट बी द वे. इफ यू हैव द ऑफर ऑफ 12 lakh, then you should ask for 40% hike on the current offer of 12 lakh. Oh. Then someone will give you the 15 LPA or 14, 16, whatever. Mm-hmm. Then when you have another offer, then go for 40% more. So this is something you have to do in the product based companies, not in the service based companies. सर्विस बेस्ड कंपनीज में उनका एक क्राइटेरिया होता है दैट एक्स इज द बजट सैलरी उनका या जो उनकी वो लोग फिक्स देंगे. होती है. राइट. करेक्ट. करेक्ट. बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वी डोंट हैव दैट मच थिंग्स. तो आपका 2 से 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, आपके पास काउंटर ऑफर्स हैं, तो आई कैन से अप्रोक्स 25 डेफिनेटली 25. प्रोडक्ट बेस्ड राइट. कंपनीज यस. आर पेइंग फॉर दिस. करेक्ट. करेक्ट. Specific figure you are asking if. And for service based companies, I can say if they are having the 4 years of experience, then 18 LPA is something. It also depends on location to location. बैंगलोर में कई बार ज्यादा मिलता है सैलरी पैकेज, अब वर्क फ्रॉम राइट. होम राइट. लोगे तो आपको कम ऑफर करेंगे. करेक्ट. करेक्ट. सो वी so it depends. If दैट्स गुड. ball यस. is in our court, then we can यस. ask. यस. But यस. one more दैट्स thing गुड. in that scenario, if you are the immediate joiner, then definitely you will get the good package. थोड़ा If ज़्यादा you are मिल not जाता the है. immediate करेक्ट. joiner, हाँ, राइट. immediate राइट. joiner नहीं हो तो फिर company can't give you. Right, Akshat. And one more last question. Since you have, taken my course, that Azure build to end-to-end project, so उसमें से अगर आपको कुछ benefit मिला हो, and if you can, give me here review, honest feedback कि कोर्स कैसा है, अगर कोई लुक कर रहा है इस कोर्स को, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इफ यू कैन टेल मी ऑनेस्ट रिव्यू, मतलब जो भी आपको लगा हो कोर्स में, है ना, तो Yeah, आप उस definitely. पर बता सकते हो. ठीक है, तो लाइक 2 से 3 चीजें which I like about that specific project building course. The first thing is that you did the real world debugging. आप स्क्रीन शेयर कर पूरी डिबगिंग कर रहे थे. इट्स नॉट लाइक कि आपने 4 लाइन का कोड याद कर लिया है, तो आपने लिख दिया, एग्जीक्यूट करके आउटपुट बता दिया. आप डिबगिंग कर रहे थे, आपको एरर्स आ रहे थे, आप रियल टाइम पे उसको फिक्स कर रहे थे. तो दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर दी लर्नर और फ्रेशर, कि इस टाइप के इश्यूज आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में भी आते हैं, आपको इस टाइप के एरर्स आएंगे, आपको उनको फिक्स कैसे करना है. सो दिस इज समथिंग एक्चुअली हेल्पफुल फॉर एवरीवन कि आप रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन से एक तो बता रहे थे. सेकेंड थिंग इज दैट कि जब आपको एरर्स आ रहे थे तो आप उसको स्क्रीन शेयर करके फिक्स कर रहे थे. इट्स नॉट लाइक यू आर skipping the video and then going back and then fixing the issue. So there is nothing like that going on in between of your tutorials. That was actually very helpful. And I don't think that it's a very big deal to grab the new technology. However, what matters is like what kind of initial setup you are getting, what kind of हम्म. learning resources you are getting,
and how much time do you have for the same. So this is the one good thing about your entire course, that you are doing the real world projects, and also you are doing the debugging in front of everyone after sharing the screen. So that was quite helpful. Moving forward, second thing I would like to mention here is your accents. You were speaking in the purely Indian English, so that was quite helpful. Let's say if I will take any other course which may be better than your course, but if I am not able to understand what this person is saying, then it doesn't make any sense for me. अगर मैं फॉरेन में जाके 1 करोड़ का भी कोर्स करता हूँ और सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है, उसके राइट। एसेंट से समझ में नहीं आ रहा है मुझे, या तो ये वो कोर्स प्रॉब्लम मेरे बहुत किसी लोग काम को का होता नहीं है। है। इवन इवन बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि यू कैन अपलोड द कोर्स ऑन हिंदी लैंग्वेज, सो दैट थोड़ा सा अच्छा उन लोग को समझ में आए, क्योंकि Correct, एवरीवन definitely that would be एवरीवन helpful डजंट because डजंट यस। the purpose of taking your course is to learn the Azure Data Engineering, not to learn the English. For English, we have different courses. Else नहीं तो Azure भी समझ में नहीं आएगा, Big Data भी समझ में नहीं आएगा और English भी नहीं समझ आएगी. या राइट राइट। तो that is something. तो ये अच्छा था कि आपने English Essence में बोला. पहले आप बोल क्या रहे हो वो समझ में आना चाहिए, फिर हाँ आपकी English समझ में आना चाहिए, फिर आप काम क्या कर रहे हो वो समझ में आना राइट चाहिए. राइट That राइट is the flow. राइट। एंड एक और चीज़, आपको So I would कोर्स में like to कौन explain. सा मॉड्यूल अच्छा लगा काफ़ी? लाइक एडीएफ मॉड्यूल था, उसमें डेटाब्रिक्स का मॉड्यूल था, Hmm. देन सीआईसीडी मॉड्यूल, पावर बीआई। तो मतलब अगर मैं खुद से रिव्यू लेना चाहूँ कि उसमें आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ नया आपने सीखा कोर्स में, जो टेक्निक्स लगी गई हैं, कॉपी एक्टिविटी बनाई गई थी, तो शायद उसमें कुछ आपको नया दिखा हो, वो जेसन वाला मेथड। और इवन दो इन डेटाब्रिक्स आई हैव क्रिएटेड सम जेसन वाली फाइल, राइट? एक सिंगल नोटबुक बनाई थी जिससे वी कैन रन मल्टीपल नोटबुक्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी। सो मतलब Correct. उसमें आपको कुछ नया चीज़ जानने को मिली कि हाँ, इसमें मैंने शायद ये, अगर मैं अपनी कंपनी में ये लगाऊंगा तो शायद बेनिफिट हो, पैसे बचें, वो डेटा वैलिडेशन चेक्स एंड ऑल चेक्स जो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी वहाँ पे, कि तो वो आपको यूज़फुल लग रहा है कि हाँ, ऐसा रियल टाइम पे अगर मैं अपनी कंपनी में करता हूँ। यस। हाँ, तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस वैसे मेजरली इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि आपको डेटा फैक्ट्री से अगर पैरामीटर कॉल करना है विथिन डेटाब्रिक्स, देन व्हाट मेथड विल यू यूज. सो वी कैन से dbutils.widget.get कैन बी द आंसर ऑफ द सेम. सो आपने जो कुछ बताया है विथिन दैट पेड कोर्स, दैट इज समथिंग which can be helpful in the real world projects and for the interviews as well. Now to the answer of your question, that what are the specific parts which I actually liked in your tutorial. So let's say if I don't know your data factory and I will start learning the data factory from anywhere, let's say from Geekcoders only, and there is a very large number of videos I have to go through, 10 hours or 15 hours or video, and it's not actually possible for me to recall the same thing at the time of interview. अगर मैं 15 घंटे का वीडियो देखूंगा, उसमें आपने बीच में भाई 15 मिनट में कुछ समझाया है, वो मुझे उससे कोई पूछेगा ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो मैं रिकॉल करके आंसर नहीं दे पाऊंगा. However, अगर मैं आपके पेड कोर्स के थ्रू जाता हूँ, so within 2 to 3 hours it is something which is, तो मुझे 15 घंटे की जगह 2-3 घंटे का ही वीडियो देखना पड़ रहा है और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो कवर कर रहा हूँ. तो अजूर डेटा फैक्ट्री में जो आपने पाइपलाइंस बनाई थी, दैट इज समथिंग विच आई फाउंड द बेस्ट इन द एंटायर ट्यूटोरियल. And from my own, for myself only, I got a bit of confidence after going through that tutorial, because other parts are like mostly theoretical or end-to-end tutorial for any specific technology. However, that is the end-to-end project. So within that particular 10 to 12 hours, I will cover the multiple components of the Azure Data यस यस। Factory, ADLS, Gen2, Databricks. So that is something which is the positive part of that course. That within the 10 to 12 hours, you are covering the multiple topics. If you will go separately, then it will take the more than 50 hours, more than 60 hours for राइट the राइट same. राइट राइट So that is राइट the राइट good thing. Right, right. Okay, Akshat, I guess, we are good here. And if you want to discuss anything, we can discuss. I think, the audience को थोड़ा अच्छा वो फीडबैक मिला होगा, उनको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी हम लोग की टॉक से, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. स्टिल मार्केट इज गोइंग ऑन एंड डिमांड अच्छी है जो डेटा इंजीनियरिंग की. तो आई गेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, राइट, ऑल द पॉइंट्स which a fresher should be, right? So I think we can close this podcast, right, Akshat, if you do not have anything to discuss. Yeah, I don't have anything. I just want to say all the best to all the freshers, non-technical Yes, people, technical people having some experience in it.
So because at fresher level, or if you have to switch the technology, there are a lot of challenges one have to face. That what are the resources? So thanks a lot to you first of all for providing the Mm. platform Geekcoders that are having a lot of videos in details for the free of cost. However, one new course you have launched for the building end-to-end project, that is something which is also very helpful for someone who is having the basic knowledge of Python, SQL, Spark, Azure, and Data Factory and Databricks as well. So that is something you are doing great for everyone. So thanks a lot for the same and all the Thank you, best to the Akshat, freshers. and And I would like to say to the freshers that please go for the big data and cloud. Nowadays, this is something which is extremely demanding. yep, yep, Akshat. I hope you're also doing great, and please let me know, if you need any help of mine, so we can connect later also. Yeah, Yeah. yeah, sure. Okay. I will be Thank. also help out happy to help out the freshers or Yeah, anyone yeah, if need sure. any kind of help. Yeah. Okay. Okay. Okay, Sagar, thanks a lot. Yes, It yes. was nice to Thank you. connect with you. Yes, yes. And thanks a Thank lot. you. Thanks a lot again for inviting me to your channel. Yeah. Yes. Bye. Bye bye.